अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन फुल स्विंग पे होगी। आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ अभी तक मैंने डाले हैं, वो उम्मीद है कि आपने वो सारी वीडियो जो है ना वो देख लिए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे जेंडर एंड लॉ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट डज जेंडर इक्वालिटी मीन? ऑप्शन ए, गिविंग मैन मोर राइट्स देन वुमेन. Option B, providing equal opportunities and rights to men and women. Option C, limiting opportunities for women to maintain social order. Option D, none of the above. The right option to this question is option B, that is providing equal opportunities and rights to men and women. तो हम जाते हैं ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, which international agreement defines discrimination against women? Option A, UDHR. Option B, CEDAW. Option C, ICCPR. Option D, ICESCR. The right option to this question is option B, that is CEDAW, that is Convention on Elimination of Discrimination Against Women. तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, which article of Indian Constitution prohibits discrimination based on gender? Article 14. Option B, Article 15. Option C, Article 16. Option D, Article 17. The right option to this question is Article 15, that is option B. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which case ruled that restrictions on women working in bars at night were discriminatory? Option A, Anuj Gag vs Hotel Association of India. Option B, Air India vs Nargesh Mirza. Option C, CB Mohammed vs Union of India. Option D, AN Rajama vs State of Kerala. The right option to this question number 4 is option A, that is Anuj Gag vs Hotel Association of India. Okay, option A is the right. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। How does Article 15 of the Indian Constitution promote gender equality? Option A, by allowing reservation seats in local government for women. Option B, by abolishing untouchability. Option C, by providing free education to all children. Option D, by ensuring equal pay for equal work. Okay, so we have 4 options. The right option to this question is option A. उसके बाद which law protects women from workplace sexual harassment? Option A, Indian Penal Code. Option B, Domestic Violence Act. Option C, Vishika Guidelines. Option D, Hindu Marriage Act. The right option to this question is option C, that is Vishika Guidelines. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is the role of feminist jurisprudence in law making? Option A, to uphold existing discriminatory laws. Option B, to challenge laws that reinforce gender inequality. Option C, to ignore gender perspectives in lawmaking. Option D, to promote laws for favoring men over women. Okay, the right option to this question number 7 is option B, that is to challenge laws that reinforce gender inequality. तो ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन लॉ? We have 4 options. Option A, they create new laws. Option B, they establish legal principles for future case. Option C, they enforce international conventions. Option D, they override constitutional right. We have 4 options. The right option to this question is option B, that is they establish legal principles for future cases. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which act reformed inheritance rights for women, allowing them to inherit property under Hindu law? We have 4 options. Hindu Succession Amendment Act 2005, Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act 1986. Option C, Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Option D, Prohibition of Child Marriage Act 2006. The right option to question number 9 is option A, that is Hindu Succession Amendment Act 2005। तो हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। उसके बाद
जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच केस लेड टू अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इंश्योरिंग मदर्स कैन आल्सो बी नेचुरल गार्डियंस? ऑप्शन ए शाहबानो केस, ऑप्शन बी गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डैनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, option D Anuj Gog versus Hotel Association of India. The right option to this is question number 10 is option B, that is Geetha Hariharan versus RBI. तो we can go with option B. उसके बाद the Prohibition of Child Marriage Act 2006 repealed which earlier legislation? Option A Child Labor Act 1986, option B Dowry Prohibition Act 1961, option C Marriage Act 1955, option D Child Marriage Restraint Act 1929. The right option to this question is Child Marriage Restraint Act 1929. उसके बाद which legislation prevent sex selective abortion by regulating prenatal diagnostic techniques? Option A Hindu Succession Act 1956, option B Prenatal Diagnostic Technique Regulation Prevention and Misuse Act 1994, option C Maternity Benefit Act 1961, option D Equal Remuneration Act 1976. The right option to this question is option B, that is prenatal. Okay, तो prenatal इसका आएगा, sorry, prenatal. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 विच एक्ट इंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज मैंडेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मैटरनल बेनिफिट एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। What is the primary purpose of Maternity Benefit Act 1968? Regulate prenatal diagnostic, ensure women have equal rights and opportunity in the workplace, provide maternity benefits and job security to women. Option D, prevent domestic violence against women. The right option to this is option, question number 14, option C आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच लेजिस्लेशन अलाउज स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन and children to ensure equality? Option A Maternal Benefit Act, Hindu Succession Act, option C Equal Remuneration, option D Article 15(3) of the Indian Constitution. The right option to this question is option D, that is Article 15(3). Okay, तो Article 15(3) पे टिक कर सकते हैं यहाँ पे टिक। Okay, moving to our next question. The amendment to the Hindu Succession Act 2005 granted women equal rights to inherit which type of property? Option A agriculture land and co-personary property, option B industrial property, option C public property, option D private property. The right option to this is option A, that is agriculture and co-personary property. तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, अराउंड 16 क्वेश्चन तो हमने इसमें किए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।